वेलकम एवरीबॉडी। शुरू करते हैं आज का पॉडकास्ट। बहुत मजा आएगा। हमारे साथ अद्वैत सर हैं, ऑल्सो नोन एज द वेल्थ एनरिच, द मैन बिहाइंड वेल्थ एनरिच. So thanks first of all, sir, for accepting our invite. I'm really excited for tonight. We are going to learn so much from you. Before we dive right into it, thoda sa if you can enlighten us, sir, with your view on the market right now, and what do you think is happening, what's going to happen, if you can give us a view, because I think it's right now it's a very critical juncture where anything can happen. Market ऐसे लेवल पे कि ऊपर भी जा सकता है, and एक small time resistance भी है, वो नहीं क्रॉस कर पाया तो काफी नीचे भी जा सकता है. But I would love to know, what do you think of the market right now, sir? Yeah, it's a valid point because markets have run up in the last, if you look in the last less than 2 months, less than 7 weeks, market have gone up more than 12%. तो जिस तरह का फॉल आया था आफ्टर नवंबर, वेयर मार्केट टैंक्ड ऑलमोस्ट 20-21%, and then there was a laggard phase between January till June, and जून में करेक्शन बढ़ता गया. But I believe ये जो run up हुआ है in the last 6-7 weeks, this has been a little bit too fast for my liking. बहुत जल्दी हो गया है. There are valid reasons behind it, क्योंकि पहले FIIs जून मिड तक सिर्फ बेच रहे थे. They were on a massive selling spree, and now all of a sudden they started pumping money back into the markets, और अब थोड़े DIIs थोड़े शांत हुए हैं. But एक liquidity pump in हो रही है मार्केट में. मार्केट जस्ट तेजी से भाग रहा है. आई बिलीव इट शुड टेक अ ब्रीदर नाउ. नेक्स्ट 3-4 months, a range bound market would be one of the healthiest things that can happen, and it will be the best thing that can happen going forward. Yeah, that's what I believe. राइट सर, अभी लाइक यू राइटली सेड, एफआईआईस की भी थोड़ा सा जो सेलिंग का प्रेशर बना हुआ था वो भी आई थिंक थोड़ा सा कम हुआ है. एंड डीआईएस ने ऑफ कोर्स अकॉर्डिंगली बैलेंस किया. आई थिंक इस बीच भी काफी कुछ हुआ कि जब भी डीआईएस निकलते थे तो फिर एफआईआईस आ रहे हैं, और जब एफआईआईस निकल रहे थे तो डीआईएस कैप्चर कर रहे थे. बट लुकिंग एट ब्रॉडर मार्केट्स एज वेल, आई थिंक आज भी जो मार्केट था वो काफी कुछ ब्रॉडर मार्केट से यूएस की रैली देख के हम लोगों ने फॉलो अप किया था. डू यू थिंक इसका भी इम्पैक्ट हम लोग अभी देखेंगे ब्रॉडर मार्केट्स में भी, एंड वी विल स्टार्ट फॉलोइंग देम मोर एंड मोर? Yes, Vishu, इसमें the whole point is there are certain geopolitical issues which are sort of spoiling the Indian party. Obviously, for a economy like India, which is highly dependent on energy, which is crude mainly, crude and gas, as a developing country, any turbulence in the market geopolitically, which takes the oil prices towards the 100 zone, that has a direct negative impact on India. तो जब जब क्रूड के इश्यूज कोई भी रीजन से आएंगे, क्रूड में तेजी आएगी, इंडिया के लिए वो बिग नेगेटिव है. अब ये जो क्रूड की तेजी है, ये कितने टाइम तक चलेगी, वी डोंट नो. Hopefully, in the next couple of months, things will settle. And now we have to also understand that with crude lingering between $90 and $110, still India has been holding its front pretty well. Imagine if crude goes down another 20-25% from here, direct impact आता है हमारी bottom line पे Indian companies के, and that's where the next phase, a massive phase, bull run phase can start. And I think FIIs भी इसीलिए थोड़े से रुके हुए थे बीच में, because the uncertainty of this war, Russia Ukraine का, with the crude and energy prices, once it settles down in the next few months, I think a very strong secular run is on the cards. Yeah. Right. Perfect, sir. So that is a little bit about broader view about the market and Indian market. So thank you so much for that. Now let's get to the meat of the game, जो आज हम लोग discuss करने आए हैं, which is we want to learn from you how to exactly make our way in the stock market. So please, sir, treat us as your students. I myself am very new to the markets. मतलब I belong to the COVID generation जो अभी markets में घुसी थी. So how do you can you tell us a little bit about your strategy, your philosophy in the stock markets? Okay, good way of asking. And we are all learners in the market. We are all learning new things. Even Warren Buffett कहते हैं कि he is still learning about markets. So it's a never-ending process. Before I discuss any of these stocks and investing ideas, I would like to clarify that I am not a SEBI registered analyst or a wealth advisor. All the information is
my own experiences and for educational purpose only. Please take it in the correct manner. Coming back to your question, the investing philosophy or investing strategies. Uh, my first exposure to Indian markets happened in the year 2003, 2004. Obviously, I was a naive. I did my MBA, but still I had no knowledge about how equity markets work. एंड मेरे पहले 4 5 6 साल में सारा एक्सपोजर इक्विटी मार्केट्स का था थ्रू म्यूचुअल फंड्स. इक्विटी एनालिसिस आता नहीं था, डिडंट नो हाउ टू पिक अप स्टॉक्स. बट व्हेन आई वाज इन्वेस्टेड इन म्यूचुअल फंड्स विशु, अब तो वो कम होता है ऐसा, बट म्यूचुअल फंड्स की एक इन्फो बुकलेट आती है एवरी 3 मंथ्स, एवरी 6 मंथ्स. दे विल सेंड यू, जैसे डीएसपी की, रिलायंस की, दे विल सेंड यू अ बुकलेट विच विल टेल यू अबाउट what are the mutual funds they are invested in and which are the stocks and performance kya hai, what are the management costs and all other things. So in those first 3 4 5 years of my investing journey through mutual funds, I used to go through this prospectus info booklet and look at which stocks the mutual funds are investing in. अब ये दिस इज अ नो ब्रेनर दैट सारी म्यूचुअल फंड्स, सारे जो लार्ज कैप म्यूचुअल फंड्स थे इंडिया के, उनके 5 7 फेवरेट स्टॉक्स होते थे जो सब में भर भर के लिए होते थे. वही आईसीआईसीआई बैंक होता था, वही टीसीएस होता था, वही एचडीएफसी, बजाज फाइनेंस बाद में एग्रेसिव हुए ये लोग. बट वही मेन लार्ज कैप्स, अल्ट्राटेक सीमेंट हो जाए, एचयूएल हो जाए, ये 5 7 बड़े स्टॉक्स हर मेजर म्यूचुअल फंड्स के पास थे, प्लस द एसबीआई एंड द ओएनजीसीज एंड ऑल दोज अदर थिंग्स. बट मिड कैप स्टॉक्स में बड़ा अच्छा एक स्टडी करने को मिलता था थ्रू दिस इन्फो बुकलेट्स. क्योंकि होता क्या था मिड कैप स्टॉक्स में, जैसे आज के टाइम पे विशु, वी हैव सो मच ऑफ इंफॉर्मेशन अवेलेबल ऑन द इंटरनेट. आज से 15 17 साल पहले टू इवन अंडरस्टैंड कि मैनेजमेंट की क्या कमेंट्री आ रही है या रिजल्ट्स कैसे आए हैं, इट वाज अ मैसिव टास्क. आज हमारे पास स्क्रीनर है, आज हमारे पास 50 डिफरेंट वेबसाइट्स हैं. स्टॉकेज इज आल्सो ग्रेट वेबसाइट. देयर मेनी मल्टीपल वेबसाइट्स वेयर ऑन अ क्लिक ऑफ अ बटन आपको मैनेजमेंट की इंटरव्यूज से लेके आपको उसके लास्ट 20 25 क्वार्टर के रिजल्ट्स, उसके आरओसीज, आरओईज, उनके फ्यूचर ग्रोथ प्लान्स, कैपेक्स, सब कुछ दिख जाता है. बट उस जमाने में 15 17 साल पहले ऑल दीज थिंग्स वर नॉट इजीली अवेलेबल. तो जो गलतियां मैंने करी या मेरी जनरेशन के उस टाइम के इन्वेस्टर्स ने करी है, वो ब्लंडर्स होते थे बिकॉज हमारे पास इंफॉर्मेशन सोर्स नहीं था. लकीली विशु, अब लकीली इन द लास्ट 10 years आईटी के उससे इंफॉर्मेशन शेयरिंग, इंफॉर्मेशन का सर्च करना इज मच मच इजी. सो investors who make blunders in stock picking in today's time are actually doing it just because of their sheer stupidness. क्योंकि आपके पास बहुत सारा डाटा है to take an informed decision. उसके बावजूद if you are not able to get this thing right, get the stock picking ideas right, then भगवान ही आपका मालिक है. Going back to the early days of stock picking, 2007-8 का Lehman crisis was the big dent in my confidence and in my portfolio. That was the first major crash that I saw. But it made me a much wiser investor. और उसका फायदा मैंने, जैसे विशु अभी बोल रहे थे, आप लोग कोविड जनरेशन इन्वेस्टर्स हो, 2007-8 का लीमन क्राइसिस का जो लर्निंग मिली, उसका मैंने भरपूर फायदा उठाया 2020 के कोविड क्रैश में. So I would say, yeah, whatever I had lost in my portfolio value, obviously the portfolios छोटे हुआ करते थे हम सबके, उसका multiple फायदा, multiple gains were taken in 2020. So it has been a learning journey and it has been a very enriching journey. And I believe a lot of the investors who are tuned in right now might have experienced some downfall in the markets. जैसे आपकी कोविड जनरेशन की बात करें तो लास्ट 2.5 साल में आप देखिए मार्केट ने काफी उथल पुथल दी है. एंड आई थिंक वी ऑल हैव बिकम वाइजर एंड looking forward to markets taking its own leap in future. Yeah. डेफिनेटली सर. इनफैक्ट जो अभी रिसेंट करेक्शन आया, सो कोविड जनरेशन हम लोगों ने सिर्फ बुल मार्केट्स देखे थे, एंड देन उसके बाद से जो अभी ये जो करेक्शन, वो ऑफकोर्स वो 18,000 तक का इतना लंबा रन गया था, वो वापस 15,000 तक जब नीचे नीचे बारी बारी ड्रैग हुआ, तो उस समय
फॉर द फर्स्ट टाइम आई थिंक काफी लोगों ने रियलाइज किया, मैंने भी अभी किया, अभी वापस उठ के 17,500 पे आ गया है। बट जो 15,000 पे हालत थी, तो एटलीस्ट मेरे को मन नहीं कर रहा था लेने का कुछ भी, कि नहीं ऑलरेडी अभी बहुत लॉस में, मुझे कुछ और नहीं डालना। एंड नाउ वंस अगेन आई सी कि इट्स अगेन बैक टू दैट लेवल। तो अभी फिर से वो फोमो होता है। सो पीपल, सो आई थिंक कहीं साइकोलॉजी में भी वो रहता है कि अब लोगों का फिर से मन कर रहा है इन्वेस्ट करने का, व्हेन अगेन देयर हैज बीन अ सिग्निफिकेंट बुल रन। जैसे आपने शुरुआत में बताया कि इट हैज बीन टू फास्ट, 12% रन अप जो हुआ है। बट येट अब लोग आ रहे हैं इन्वेस्ट करने का। मेरे को खुद को मन करता है कि अभी यार ये भी स्टॉक, अभी सारे चार्ट्स भी अच्छे चल रहे हैं, सब कुछ अच्छा है, तो सबका मन कर रहा है वो करने का। बट जब 15,000 था उस समय कोई चार्ट्स पे भरोसा नहीं आ रहा था, कुछ नहीं आ रहा था तब। एंड दैट वाज That's प्रोबब्ली द true. राइट मोमेंट व्हेन एवरीबॉडी वाज पैनिकिंग। So I would Yes. love to know, sir, आप जैसे अभी we have a lot of resources and we have a lot of things on hand, but there are two aspects to it. So both I would love to learn from you. One is first of all कि the easy part of it may be कि how do you select your stocks? Like what fundamentals maybe what are your favorite fundamentals that you like to track? The second part is the more difficult part, I guess, that we can cover maybe later in the podcast, is the psychology of uh, sticking to your guts no matter what the market says and what your fear tells you. So, if we can start with thoda sa fundamentals that you track, and how do you select your stocks, sir? Yes, yes. So, see, one very important criteria is making money in stock markets is secondary and not losing money in stock market is primary. हमारा पहला फोकस है पैसा नहीं गवाना। एक बार वो चीज आपके दिमाग में घर कर जाए, देन यू विल अंडरस्टैंड कि ओके, लेट अस पिक अप स्टॉक्स जिसमें रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मेरे फेवर में हो। Now talking about risk, there are five major risks in the market. When you're investing in the market, there are five major risks. मैं briefly I'll go through it to understand कि आपके पास क्या चीजें कंट्रोल में है और क्या चीजें आपके हाथ में नहीं है। सबसे पहले हम आते हैं, लेट्स लुक एट द बेसिक पार्ट फर्स्ट, विच इज अ बिजनेस स्लैश प्रोडक्ट रिस्क। कंपनी क्या बनाती है, उस प्रोडक्ट में क्या डिसेप्शन हो सकता है, सिक्लिकल प्रोडक्ट है, वैल्यू एडिशन कितना है, तो बिजनेस स्लैश प्रोडक्ट रिस्क एक होता है। Then the second, which is a very subjective area, is called management risk. मैनेजमेंट की पेडिग्री कैसी है, कितनी एग्रेसिव है, क्या प्रोएक्टिव एक्शंस ले रहे हैं वो, कितनी फ्यूचरिस्टिक है। Then the third one is policy slash government risk. पॉलिसी रिस्क आती है पीएसयू स्टॉक्स में। आपने देखा होगा लास्ट कई सालों से द लाइक्स ऑफ एचपीसीएल, बीपीसीएल, गेल ये नहीं प्रॉफिट बना पाते हैं बिकॉज ऑफ वेरियस पॉलिसीज। इवन आईआरसीटीसी का एक सागा हुआ था 1-1.5 साल पहले। तो ये पॉलिसी रिस्क चलती रहती हैं। देन देर इज एन एक्सटर्नल फैक्टर रिस्क जो हम अभी गो थ्रू हो रहा है, जिससे हमारा कि भाई वॉर हो गई है एंड द क्रूड प्राइसेस हैव शूटेड अप, या लॉजिस्टिकल इश्यूज आए थे कोविड के टाइम पे, एक डिस्ट्रप्शन वहां हो गया। सो दीज आर द फोर मेजर रिस्क, जिसमें से मैनेजमेंट रिस्क हम चेक कर सकते हैं, प्रोडक्ट और बिजनेस रिस्क चेक कर सकते हैं, पॉलिसी और एक्सटर्नल फैक्टर रिस्क हमारे हाथ में नहीं है। तो चार में से दो हमारे हाथ में नहीं है, दो कुछ हद तक हाथ में है। एंड द फिफ्थ मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर स्टॉक सिलेक्शन इज योर वैल्यूएशन रिस्क। इस रिस्क को समझने के लिए हमको डीपर रिसर्च करनी पड़ेगी, एनालिसिस करना पड़ेगा, क्योंकि बाकी दोनों तो मैक्रो लेवल, बाकी जो नॉन हमारे मैनेजेबल है वो तो वी कांट डू मच अबाउट इट, और बिजनेस और मैनेजमेंट रिस्क फिर भी हम इजीली स्टडी कर सकते हैं। बट वैल्यूएशन रिस्क एक बार आपने अपनी समझ ली और आपकी रिस्क प्रोफाइल से वो मैच हो गई, देन यू आर ऑन अ पाथ टू बेटर स्टॉक सिलेक्शन। इसका आपको एग्जांपल मैं दूं कि आपको लगता है कि मुझे एक अच्छा स्टॉक खरीदना है फॉर 5 to 10 years, एंड यू गो फॉर ओके, आई वांट टू बाय एन एचयूएल और अ कोलगेट और अ पिडिलाइट जो 15-20% ग्रोथ दे रहे हैं। तो आपने अपनी एक रिस्क समझ ली है कि मुझे एक हाई ग्रोथ रिसेंट ग्रोथ कंपनी चाहिए एट अ रीजनेबल वैल्यूएशन। अब वो रीजनेबल वैल्यूएशन आपको डिसाइड करना है कि वो आपके लिए क्या है। एक एचयूएल, एक पिडिलाइट, एक एशियन पेंट्स, एक डीमार्ट ग्रोथ स्टॉक्स कभी भी आपको 25, 30, 40 पीई पे नहीं मिलेंगे। वेरी वेरी in only in horrible circumstances, a big crash, will you get a top pedigree company, high growth pedigree company, large cap for under a 15, 20, 25 p, क्योंकि ये ग्रोथ इतना अच्छा कर रहे हैं, इतने अच्छे मोड्स हैं इनके। तो आपको अपनी रिस्क एपेटाइट उस वैल्यूएशन वाले पार्ट में डिसाइड करनी है कि मैं क्या वैल्यूएशन इनको दे सकता हूँ। लोग बोलते हैं एशियन पेंट्स मार्शल का फेवरेट स्टॉक है, उसके बाद आप पिडिलाइट को ऐड कर दीजिए, मैं एचयूएल को ऐड करता हूँ, आई कैन लुक एट डी मार्ट।
ये स्टॉक्स आज से 10 साल पहले भी महंगे थे, आज से 15 साल पहले भी जो लिस्टेड थे वो महंगे थे, डीमार्ट तो रिसेंटली लिस्ट हुए हैं फिर भी, बट ये पहले महंगे थे और आगे भी महंगे ही रहेंगे। क्यों महंगे रहेंगे? क्योंकि इनमें ग्रोथ ऐसी है, इनकी मैनेजमेंट पेडिग्री ऐसी है, वो सारे जो हमने फैक्टर्स देखे स्टॉक के, इनके आरओसीज अच्छे हैं, आरओईज अच्छे हैं, डेट कंट्रोल में है, ग्रोथ सेल्स और इसमें प्रॉफिट्स में सब आ रही हैं। तो इस तरह के स्टॉक्स हमेशा महंगे रहेंगे और आप ये सोच के अगर उसको नहीं लेते हैं कि भाई मैं HUL 45-50 पी पे क्यों लूं या मैं एशियन पेंट 70 पी पे क्यों लूं, मुझे एक दूसरी पेंट कंपनी XYZ या एक एग्जांपल मैं खुद भी दे सकता हूँ, शालीमार पेंट्स मुझे चीपर वैल्यूएशन पे मिल रही है, यू नो, विच अ नैनो कैप कंपनी, बट दैट इज द रॉन्ग वे ऑफ डूइंग अ सिलेक्शन ऑफ योर पोर्टफोलियो, बिकॉज यू आर देन सेक्रीफाइस ऑन क्वालिटी जस्ट बिकॉज मुझे वैल्यूएशन चीपर मिल रहे हैं। कई स्टॉक्स जो सस्ते होते हैं वो सस्ते ही रहते हैं। आप कोई भी अच्छा PSU बैंक देख लीजिए, अच्छा क्या सारे SBI को छोड़ के सारे PSU बैंक देख लीजिए, ये पहले भी सस्ते थे, ग्रोथ नहीं देते, NPAs होते हैं इनके और आगे भी इनका क्या होगा गॉड नोज। सो वैल्यूएशन रिस्क इज वन एरिया जिसमें आपको एक रिसर्च करनी पड़ेगी। यू डू योर ओन, कंडक्ट योर ओन एनालिसिस, एनुअल रिपोर्ट्स पढ़िए, अपने रिस्क को स्प्रेड करिए। तो आप अगर देख रहे हैं हाउ म्यूचुअल फंड्स डू इट, म्यूचुअल फंड्स डू लाइक डेट एंड इक्विटी करते हैं, ऐसे ही जैसे बैलेंस फंड्स होते हैं ऐसे ही आप अपना बैलेंस कैसे करेंगे। वाइल स्टॉक सिलेक्शन यू कैन लुक एट स्टॉक्स विच आर कंसिस्टेंट कंपाउंडर्स, जो मेनली निफ्टी के अच्छे स्टॉक्स हो वो हो। देन आपको थोड़ा अल्फा क्रिएट करना है तो आप निफ्टी नेक्स्ट 50 में से देखिए या BSE टॉप 200 में से कोई अच्छे मिड कैप स्मॉल कैप्स देखिए। तो आपको एक पूरा एक बैलेंस मेंटेन करना है ताकि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम यू कैन मैच द स्टॉक मार्केट रिटर्न्स व्हाट यू आर गेटिंग, प्लस with slightly higher understanding of the market you can beat Sensex and Nifty returns over a period of time, but it definitely needs a lot of understanding of the ratios, the growth, the individual stock reports, understanding their field, what are the capex plans, what are their futuristic growth agendas. तो ये सारी चीजें नीड्स योर टाइम, टाइम एनर्जी एफर्ट तो डालना ही पड़ेगा। और बाई चांस अगर आपके पास नहीं है ये सब डालने के लिए, then go for the tried and tested situation where you buy good quality mutual funds or in ETFs. ETFs हल्के हल्के पिकअप कर गए हैं मार्केट में, इंडिया में ETF ट्रेंड बहुत लेट आया है, बट अब अच्छे ETFs लीजिए, उनमें कॉस्ट लो होता है, या फिर एक अच्छी हाई पेडिग्री हाई ग्रोथ वाली लार्ज कैप मिड कैप म्यूचुअल फंड लीजिए। सो आई थिंक दैट्स द वे an investor should look at his money getting parked into equity markets. राइट, परफेक्ट सर। सर इसी के अराउंड कुछ एक क्वेश्चंस और है मेरे पास। फर्स्ट ऑफ ऑल, सो पोर्टफोलियो साइजिंग इज अ बिग doubt that I have. I often ask this in our podcast. Do you have maybe an ideal number of of stocks that a person as a retail investor जिसको maybe जॉब है या इवन फुल टाइम है, that they should be tracking one, maybe watch list में रखते हैं? And second is the number of stocks that they are holding. So there is so the basic question that I have is diversified portfolio is one thing and concentrated portfolio is another approach. So is there an ideal number that you have in mind maybe? नहीं, इसका कोई करेक्ट और सही और गलत आंसर नहीं है। कॉन्सेंट्रेटेड पोर्टफोलियो PMSs में काफी होते हैं, 12 से 15 स्टॉक्स, दे आर डूइंग वेल। पीपल हैव स्टॉक पोर्टफोलियोज ऑफ 30 to 35 40 स्टॉक्स, दे आल्सो आर डूइंग ऑल राइट। म्यूचुअल फंड्स के पास करीब 70 80 100 स्टॉक्स भी होते हैं। पीटर लिंच के पास एक जमाने में 200 स्टॉक थे, तो पॉइंट इज हाउ पीपल look at diversifying is completely up to their perception of कितनी उनको रिस्क लेनी है। But my personal opinion, 35 40 45 stocks as an individual investor, उसके ऊपर ट्रैक करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। आप ये सोच के ले रहे हैं कि भाई मैं 4 अच्छे बैंक उठा लेता हूँ, 4 अच्छी IT कंपनीज, 3 अच्छे ऑटोमोबाइल कंपनीज, 5 केमिकल कंपनी, ऐसे करके आप अगर 70 80 स्टॉक उठा लेते हैं तो ठीक है आपने उठा लिया, लेकिन आप उसको ट्रैक कैसे करेंगे? उसमें से 5 7 स्टॉक गो बस्ट और परफॉर्म वेरी पुअर, you will not be able to track. It's not humanly possible to keep the tracking of 70 80 100 stocks. That is why most investors in my circle, mere friends and all, we usually have a portfolio between 15 17 stocks to around 35 40 stocks. As I said, there's no right or wrong answer, but
कॉन्सेंट्रेटेड पोर्टफोलियो, अगर हाई कन्विक्शन बेट्स हैं आपके पास, अगर आप सोचते हो कि भाई ये 20 से 25 स्टॉक्स मेरे पोर्टफोलियो में रहे, मैं उनको अच्छे से स्टडी कर रहा हूँ, पॉसिबिलिटी ऑफ एनी स्टॉक गोइंग रॉन्ग इज मिनिस्क्यूल, क्योंकि यू हैव टेस्टेड देयर पास्ट व्हाट दे हैव डन एंड यू आर वेरी वेरी होपफुल अबाउट अ वेरी प्रॉमिसिंग फ्यूचर। ऐसे में 20-25 स्टॉक्स का पोर्टफोलियो हो तो आपका एसेट एलोकेशन, आपका जो परसेंटेज वाइज स्टॉक में एलोकेशन है वो अच्छा रहेगा। मान लीजिए आपके पास 20 स्टॉक हैं या 25 स्टॉक हैं, तो आपका हर स्टॉक में या तो 5% या 4% का एलोकेशन होगा, वेटेज होगा स्टॉक का। जब ये स्टॉक, मान लीजिए आपके पास एबीसी स्टॉक है और विच इज 5% ऑफ योर पोर्टफोलियो, और जब वो मल्टी बैगर बनता है या 3x 4x 5x होता है, तो आपकी जो वेल्थ बनती है दैट इज ऑल्सो बिगर। दैट इज वाई स्टॉक में वेटेज is critical, and a lot of books have been explaining why it is important not to have a very very diversified portfolio. Magar again, as I said, it's on individual preferences. Yes. Right. Perfect, sir. Perfect. Okay. Sir, next question मेरा है. So there are three different approaches that retail investors में right now I think काफी popular हैं. One is buy the dip, कि जैसे करेक्शन आता है या कुछ आता है तो जो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनीज हैं उनको वैल्यूएशन के बेसिस पे वी कैन पिक अप. Another thing that is popular is SIPs, where they don't really मतलब you don't care about कि मार्केट कहाँ जा रहा है, ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, स्टॉक ऊपर नीचे क्या है. फाइंड अ गुड कंपनी एंड उसमें सिस्टमैटिकली स्टार्ट इन्वेस्टिंग अ लिटिल बाय लिटिल अमाउंट, आप हर महीने करते रहो. एंड द थर्ड वन इज कि अगर करेक्शन आया है, बाय दोज कंपनी जो कि अगर ब्रॉडर मार्केट्स में करेक्शन है उसके बाद भी इफ दे स्टे स्ट्रांग, only by those companies which are staying strong and that did not fall as much as the market did, maybe jinka beta low hai. Do you have a preference in any of these approaches? And so a lot of people kabhi so advice milti hai, kuch log kehte hain ye achhi company hai dip mein buy karo, कोई कहता है कि नहीं इसको बिना सोचे एसआईपी करते रहो, कोई कहता है कि ये नहीं गिरी डिप में इसलिए इसको बाय करो. सो विच ऑफ दीज अप्रोचेस डू यू मे बी हैव अ प्रेफरेंस? वेल, वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक ऑफ बाय द डिप. मुझे बहुत पसंद है टॉपिक, क्योंकि जब जब मैंने लास्ट 17-18 सालों में बाय द डिप किया है मुझे फायदा ही हुआ है. ऑब्वियसली इट्स आई एम अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर, बट जब बाय द डिप होता है विशु, तब काफी इन्वेस्टर्स के कन्विक्शन हिल जाते हैं. I tweeted it the other day that a couple of months back that तीन टाइप के इन्वेस्टर्स होते हैं जब मार्केट डिप हो रहा होता है. पहला इन्वेस्टर होता है जो जाके फटाफट बाइंग शुरू कर देता है, बाई ऑन डिप्स सुन के कि चलो मुझे एवरेज करने का मौका मिल रहा है, मार्केट 10-12% नीचे है. दूसरा एक इन्वेस्टर होता है जो जैसे डिप शुरू होता है वो बेचना शुरू कर देता है, बोलता है लेट मी बुक माई प्रॉफिट्स, और मार्केट गिरेगा तो मैं तब बाई कर लूंगा. और एक थर्ड टाइप का इन्वेस्टर होता है जो उस टाइम पे कुछ नहीं करता. उसके दो तीन रीजन है. पहली बात तो उसको पता ही नहीं कि डिप कितना होगा, तो शांति से बैठा रहता है, और ही माइट नॉट हैव द सरप्लस टू इन्वेस्ट इन दैट टाइम. बाइंग द डिप्स वाली पूरी जो स्ट्रेटेजी है वो आपके कन्विक्शन के ऊपर चलती है. लेकिन अगर आप इग्नोर द डिप करेंगे तो भी चल जाएगा, बिकॉज मार्केट विल रिवर्स टू इट्स मीन. बट इन द लॉन्ग रन, if you are bullish about an economy, let's say I'm bullish about the Indian economy, I believe next 20, आजकल वो भी आ रहा है इंडिया एट 100 जी पे काफी अच्छा आ रहा है. So if I look at India growing in the next 25 years, India last 35-40 सालों से इंडियन स्टॉक मार्केट से given an average 13 to 13.5 close to 14% returns on an average annually. अगर इस सेम ग्रोथ रेट चलती रही अगले 25 साल से, कैन यू मेक अ गेस कि सेंसेक्स और निफ्टी यहां से कितना गुना हो जाएंगे? सेंसेक्स एंड निफ्टी विल बी मोर देन 20 times in the next 25 years if we keep growing at 13%. That compounding effect keeps picking up. Now, ऐसा पॉसिबल नहीं है कि हम ऐसी ग्रोथ दे पाए, बट इवन इफ 7, 8, 9, 10% एक एवरेज ग्रोथ, जैसे जैसे इंडिया एक डेवलपिंग से डेवलप्ड इकोनॉमी बनेगी, हमारे एनुअल ग्रोथ रेट्स 13, 14, 15 स्टॉक मार्केट शायद ना दे पाए, बट 8, 10, 12 दैट इज अ गुड फिगर. सो जब हमारे पास ये एक कन्विक्शन है कि इंडियन स्टॉक मार्केट्स आगे जाके अच्छे चलने वाले हैं, तो व्हाई डू वी देन ट्राई टू टाइम द मार्केट? मुझे क्यों इस तरह का टाइमिंग करना है कि जब मार्केट में डिप आएगा आई वांट टू बी सुपर स्मार्ट कि भाई इस दफा अगर मुझे आईसीआईसीआई बैंक 650 रुपीज से मिलेगा तो ही मैं लूंगा. भाई अगर मुझे पता है कि आईसीआईसीआई बैंक नेक्स्ट 5 साल में डबल हो सकता है, अगर मुझे ऐसा कन्विक्शन है कि आईसीआईसीआई बैंक 700 रुपए का, आई लुक इट एट 1400 रुपीज इन नेक्स्ट 5 to 6 years, which will
मोस्टली हैपन, वी विल सी इन द नेक्स्ट 5 years, शायद उससे ज्यादा रिटर्न दे जाएगा। तो मैं आईसीआईसीआई बैंक को 750 पे लूं, 700 पे लूं या 650 पे लूं, दिस अ डिफरेंस ऑफ 5, 7, 8, 10%। लेकिन सामने मेरे पास 100% गेन की अपॉर्चुनिटी है। तो मैं अगर 105% बनाऊं या 80% बनाऊं, एटलीस्ट आई हैव टू कीप इन्वेस्टेड, गेट इनटू द मार्केट एंड कीप बाइंग द डिप्स। Who knows what is the dip, what is the low of a market, of a correction? We don't know, nobody knows that. बट ट्रेडर्स के लिए, आप जैसे ट्रेडिंग की बात कर रहे थे विशु, ट्रेडर्स के लिए एक स्टॉप लॉस बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। बट इन्वेस्टर्स के लिए बाय ऑन द डिप इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज वो आपको एक अपॉर्चुनिटी देता है। ट्रेडर प्राइस को ट्रेड कर रहा है और हम बाई कर रहे हैं वैल्यू। तो एक टाइम ऐसा आता है जब मार्केट बोलता है आई एम मोर, मैं आपको स्टॉक्स दे रहा हूं विच इज ऑफरिंग यू बेटर वैल्यू, वुडंट यू बाय दैट मोर? आप पैंटलून्स में सेल में जाते हो, राखी की सेल चल रही थी लास्ट वीक, तो आप इंडिपेंडेंस डे की सेल चल रही है, तो यू गो एंड बाय मोर। बट वो साइकोलॉजी इन्वेस्टिंग में पूरी उल्टी हो जाती है, वेयर पीपल थिंक ओके मार्केट और क्रैश होंगे, मुझे नहीं पता मार्केट में कितना क्रैश आएगा। सो दैट टाइमिंग ऑफ द मार्केट इज अ वेरी 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 फ्यूटाइल एक्सरसाइज। इट्स इम्पॉसिबल टू फॉर एनीबडी, द बेस्ट ऑफ इन्वेस्टर्स, इवन राकेश झुंझुनवाला भी ये बोलते हैं कि मैं कभी भी मार्केट की बुल मार्केट या बेयर मार्केट का जो टॉप और बॉटम होता है कभी मैं जज नहीं कर पाया। एंड वी आर नाइव इन दैट रिगार्ड टू इवन थिंक कि हम उसको टाइम कर पाएंगे। या Right. Awesome, sir. Okay. So, sir, these were the questions जो मेरे पास, ये तो हो गए एंट्री और नॉर्मल मैनेजमेंट के। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो आई थिंक आई पर्सनली फाइंड वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट थिंग्स टू डू, विच इज द एग्जिट। सो एंट्री पॉइंट्स बहुत लोग एडवाइस देते हैं, ये स्टॉक अच्छा है, बहुत सारे टेक्निकल्स फंडामेंटल्स सब रहते हैं, बट आई थिंक एग्जिट इज अ वेरी ट्रिकी थिंग टू डू। मतलब, एंड दिस आई एम सेइंग फ्रॉम टू एस्पेक्ट्स, वन इज ऑफ कोर्स रिस्क मैनेजमेंट, स्टॉप लॉस वाला पर्सपेक्टिव, एंड द अदर इज कि टारगेट क्या होगा। एंड आई स्पेशली वांट टू आस्क यू बिकॉज आपका you hold multi-baggers and you wealth compounding and long term investing में आप रहते हो, जो कि retailers के लिए बहुत important है। So I would love to know कि for a retailer who is investing medium to long term, how should they decide their exits, targets and stop losses, maybe risk management ways? ओके, सो लेट अस गेट वन क्लैरिटी कि ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग में ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि ट्रेडिंग में आपके कैसे टारगेट्स होते हैं। आप एक चार्ट देखते हैं, आप उसको दिखाते हैं कि ये मेरे को एक लेवल्स अचीव होने चाहिए बिकॉज इट्स शोइंग स्ट्रेंथ। फंडामेंटल इन्वेस्टिंग में इस तरह के टारगेट्स नहीं आते हैं। वी कैन ओनली से अ कंपाउंडिंग स्टोरी। सो आज आज एचडीएफसी बैंक 1300-1400 रुपए पे है, तो मेरे पास ऐसा कोई एचडीएफसी बैंक का टारगेट नहीं है कि अगले 5 साल में कहाँ होगा। बट मुझे ऐसा लगता है कि एक बार ये मर्जर हो जाए तो एचडीएफसी बैंक अपनी प्रॉफिट सेल्स एंड प्रॉफिट ग्रोथ 12-14% से करता रहेगा। अच्छी पेडिग्री कंपनी है, तो 15% कंपाउंडिंग, 17-18% कंपाउंडिंग दे सकता है। इन द पास्ट में उसने ज्यादा दिया है, नो डाउट, बट मैच्योर कंपनी हो चुकी है अब। सी, स्टॉक की सेलिंग और टारगेट्स से पहले हमको ये समझना पड़ेगा कि आप अपना पोर्टफोलियो जब कुछ स्टॉक सेल करते हो, वी कॉल इट चर्निंग ऑफ योर पोर्टफोलियो। व्हेन यू आर चर्निंग योर स्टॉक पोर्टफोलियो, यू आर इन अ वेरी ट्रिकी सिचुएशन। आप पूछेंगे क्यों? होता क्या है कि व्हेन यू डिसाइड टू सेल अ स्टॉक, यू गेट योर मनी बैक, एंड देन द नेक्स्ट क्वेश्चन अराइजेस कि अब आप क्या बाई करने वाले हैं। ठीक है? सो इस टाइम पे ट्रिकी क्या है? व्हेन यू डिसाइड टू सेल अ स्टॉक टू बाई अनदर वन, यू हैव टू बी राइट, नॉट वंस बट ट्वाइस, कि मैंने सही टाइम पे उसको सेल किया, अच्छा हो गया सेल, अब मैंने सही टाइम पे एक लोअर लेवल के स्टॉक को, एक बेटर वैल्यू स्टॉक को बाई कर लिया। तो मुझे 2 बार सही होना पड़ेगा। मैं अपना एचयूएल बेच के, जो अच्छी तरह से कंपाउंडिंग कर रहा है, वो आगे भी करता रहेगा, लेकिन मैं एक ओवर स्मार्टनेस में आके उसको सेल कर रहा हूं ताकि मैं कुछ और बाई कर पाऊं जो उससे अच्छा चलेगा। यू नो सो दैट इज अ वेरी 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 डिफिकल्ट वे ऑफ चर्निंग ऑफ योर स्टॉक पोर्टफोलियो। बट आपने अच्छा क्वेश्चन पूछा कि व्हेन डू आई सेल अ स्टॉक। मेरे 3-4 रीजन, सबसे इंपॉर्टेंट रीजन व्हेन आई सेल अ स्टॉक इज सिंपल एंड इजी, व्हेन आई नीड मनी। मुझे अगर पैसा चाहिए किसी और चीज के लिए एंड आई एम थिंकिंग ओके आई नीड सम सरप्लस, आई वुड सेल अ स्टॉक। बट अदरवाइज मैं क्यों स्टॉक सेल करूंगा? तो सबसे पहले कि अगर स्टॉक उसकी इंट्रेंसिक वैल्यू जो भी मैंने डिसाइड करी हुई थी बहुत जल्दी अचीव कर गया है, तो उससे मैंने एक स्टॉक लिया, मुझे लगता है 15% ग्रोथ देगा, तो मैं मान रहा हूँ कि अगले 5 से 6 साल में डबल होगा,
लेकिन वो स्टॉक सडनली 2 साल में डबल हो जाता है, मुझे लगता है कि ओके, इट हैज रन अवे फास्टर देन व्हाट इट शुड हैव रन अप, एंड आई माइट लुक एट सेलिंग द स्टॉक, क्योंकि नेक्स्ट कुछ साल वो एक एक प्लेटो हो सकता है। um, और सेलिंग वाले उसमें ऑब्वियसली द अदर मेजर रीजन ऑफ सेलिंग अ स्टॉक वुड बी इफ देयर फंडामेंटल्स डिटीरियरेट। अगर कोई भी स्टॉक बैक टू बैक क्वार्टर्स खराब दे रहा है और मार्केट कमेंट्री, उसकी मैनेजमेंट कमेंट्री में कोई भी लॉजिकल रीजन नहीं आ रहा है, दैट इज अ क्लियर सेल। दैट इज व्हाई आई से अगर आपके पास 60-70 स्टॉक है तो आप ट्रैक नहीं कर पाओगे कितनी कॉन कॉल्स की मैनेजमेंट क्या बोल रही है। फिर होता क्या है, आप उनकी बैलेंस शीट्स नहीं देख पाते, कॉन कॉल्स नहीं सुन पाते, फिर निकल के आता है आपके बिगेस्ट वेल्थ डिस्ट्रक्टर्स लाइक यस बैंक, डीएचएफएल, सिंटेक्स, ये तो मैं आपको रिसेंट बोल रहा हूँ। पास्ट में इनसे भी बड़े महारथी थे वेल्थ डिस्ट्रक्शन के, रिलायंस कम्युनिकेशन, यूनिटेक, लैंको इंफ्रा, ये मैं 2000 मिड 2000 की बात कर रहा हूँ। तो because you're not able to track what stocks are, too many stocks if you have in your portfolio, you'll not be able to track किसने गलत कर दिया रिजल्ट अपना। एंड रिजल्ट खराब आना इज नॉट एन इमीडिएट सेल सिग्नल। रिजल्ट कई स्टॉक्स के खराब आते हैं, बट पीछे से यू टू अंडरस्टैंड क्या ऐसे हेडविंड्स आ गए थे जिसकी वजह से स्टॉक इज नॉट परफॉर्मिंग, एंड दीज हेडविंड्स कैन बी टेम्पररी। a lot of pharma stocks जिनके पास केमिकल सप्लाई की शॉर्टेजेस हैं, उनके थोड़े रिजल्ट अच्छे नहीं आए हैं इस बार, बट एक रिजल्ट इज नॉट करेक्ट वे ऑफ पुटिंग इट। You can look at 2 or 3 results of stock not justifying its valuation, growth nahi aa rahi hai, but yes, so yeah, faster than expected bhag jayega stock, so that would be the first reason, and second would be अगर कॉन कॉल्स और उससे समझ में आ रहा है कि इसके फंडामेंटल्स डिटीरिएट हो रहे हैं या बहुत बड़ी डिसरप्टिव कोई चीज आ रही है, so I would sell a stock. I'll give you a quick example. Is I was very bullish on Maruti since 2009, 10, 11 में मैंने बाई किया था, and I rode Maruti from 12, 1300 levels to close to 9000 something. But 2017-18 में 2018 में I realized कि Maruti is sitting on its past laurels. Guys, I used to have a Maruti car. It's a great company, but I'm just trying to explain कि मेरी सोच कैसे चेंज हुई। I thought कि Maruti is sitting on its past laurels. महिंद्रा एंड महिंद्रा इतनी बढ़िया एसयूवीज लेके आके मार्केट शेयर गेन कर रहा है। हायुंडई इस टाइम पे क्रेटा वगैरह लेके आया था, वेरी स्टाइलिश कार्स, टोयोटा इनोवास और ये सभी मार्केट आ रही थी। एंड आई रियलाइज कि मारुति इज नॉट प्रोएक्टिव इनफ इन कमिंग अप विद न्यू मॉडल्स, एंड विद ऑब्वियसली नाउ दे हैव नॉट इवन कम अप विद न्यू टेक्नोलॉजी व्हिच टाटा हैज कम अप। तो इस तरह के अगर आपको डिसरप्टिव चीजें दिखे मार्केट में कि ये डिसरप्शन में अडेप्ट नहीं कर रही है कंपनी, कोडैक ना बन जाए। आपको पता होगा कोडैक की कहानी कि दे डिडंट सी कि डिजिटल फोटोग्राफी आ जाएगी, वो अपने कैमरा रोल्स पे अटके रहे। तो अगर ऐसा कोई डिस्ट्रप्शन आपको दिख रहा है, देन ऑल्सो अ स्टॉक विल बी अ सेल। सो आई गॉट एग्जांपल्स ऑफ मारुति आई सोल्ड बिकॉज ऑफ दैट रीजन, डिश टीवी ऑल्सो आई सोल्ड बिकॉज ऑफ दैट रीजन। या सो these would be the major stock sell reasons that I would look at. Awesome, sir. Thank you so much for sharing that. Okay, so next, sir. So this was कुछ questions जो मेरे पास थे. Next, if you could, for the next part of this podcast, I would request if you can tell us some stocks that are maybe in your watch list that we should also kind of look into. And so जो भी हम लोगों ने अभी इसमें learning करी, आपसे काफी कुछ सीखा. So based on those learnings, how do you एक live कुछ stock examples के through maybe next 2 to 3 years में that are in your watch list. Of course, for this segment, a disclaimer that none, like as always, none of this that we discuss is buy or sell recommendation. This is completely for educational purpose only. So with that disclaimer, sir, if you could share something, some insights with us. ओके, सो लेट मी स्टार्ट विद, आप इंडिया को एज एन इकोनॉमी देखते हैं ग्रो करते हुए अगले 15-20 साल के लिए। इंडिया आज नंबर 5th है जीडीपी में। आज से 20-25 साल बाद, 20 साल भी नहीं शायद जल्दी, इंडिया विल बी द थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। वी वुड बी इन द नेक्स्ट 10-12 years, we should be easily the third largest. So India is a consumption based economy. हमको ये चीज समझनी पड़ेगी कि 130 करोड़ लोग की इकोनॉमी है, हमारी कंट्री है, हमारे पास कंजम्पशन इज द बिग थीम। पर कैपिटा क्या है इंडिया में? यूएस डॉलर्स 2021 $2,100 इज द पर कैपिटा ऑफ इंडिया। और यही बंदे इस पैसे को खर्च करेंगे और इनकम बढ़ने वाली है आगे।
लेकिन जो कंज्यूमर कंपनीज हैं जिनमें जो सप्लाई कर रही है कंज्यूमर्स को, उसमें क्या है बड़ी कंपनीज? इफ यू लुक एट द प्रॉफिट पूल ऑफ ऑल द बीएससी टॉप 500 की, अगर आप सिर्फ कंज्यूमर कंपनीज देखिए, द आईटीसीज, द एचयूएल, द कोलगेट्स, द नेस्लेस, द टाटा कंज्यूमर्स, अगर आप इनका प्रॉफिट पूल देखिए तो ये है करीबन 45,000 करोड़ रुपीस का प्रॉफिट पूल है। पूरी कंज्यूमर बास्केट का 45,000 करोड़ ही सिर्फ 45,000 करोड़ ही सिर्फ इनका प्रॉफिट पूल है। ये है बीएससी टॉप 500 की कंपनीज में से निकाला है हमने। अच्छा, बीएससी टॉप 500 का क्या है प्रॉफिट पूल? दे आर क्लोज टू 6.5 लाख करोड़। सो कंज्यूमर जब बास्केट है वो अपने पूरे बीएससी 500 कंपनीज का 8% के आसपास है। बट इंडियन कंज्यूमर्स, बिकॉज कंज्यूमर ड्रिवन रहेगा आगे, ये प्रॉफिट पूल बीएससी के टॉप 500 कंपनीज के कंजम्पशन बास्केट में से हैज टू गो अप। इट विल गो अप 10, 12, 14, 15%। वही आईटीसी, एचयूएल, नेस्ले, आपके कोलगेट, टाटा कंज्यूमर, डाबर, मेरिको, ये सारी कंपनीज में एक बढ़िया ट्रेंड शुरू हो चुका है। इवन द न्यू प्लेयर्स लाइक पतंजलि और बहुत सारे नए प्लेयर्स इसमें आ रहे हैं। तो दैट इज वन एरिया which I am concentrating on, and I am exposed to this sector quite aggressively. Secondly, एक सेक्टर ऐसा है जो आंख बंद करके आपको हमेशा अपने पोर्टफोलियो में रखना है, वो है टेक्नोलॉजी। इंडिया वर्ल्ड का टेक एनेबलर है। इंडिया ने वर्ल्ड को सर्विसेज इंडस्ट्रीज में जो सर्विस इंडस्ट्री में दिया है टेक सपोर्ट एंड टेक सर्विसेज, दैट इज अनबीटेबल, अनटचेबल टू अ सर्टेन एक्सटेंट। टेक सेक्टर 12, 15, 16% आराम से ग्रो कर रहा है इतने सालों से। इंडिया के टॉप बीएससी टॉप 500 कंपनीज में से टेक सेक्टर इज गिविंग अराउंड 12 to 14% ऑफ प्रॉफिट पूल। आई थिंक क्लोज टू 14 है वो प्रॉफिट पूल। अब ये प्रॉफिट पूल टेक सेक्टर का कैन इजिली डबल इन द नेक्स्ट फ्यू इयर्स, इन द नेक्स्ट 5, 7 years। सो टेक सेक्टर, पूरे वर्ल्ड को जरूरत है टेक्नोलॉजी की। एंड विशु, आपने नोटिस किया होगा, न्यू जनरेशन इन्वेस्टर्स जानते हैं ये कि कोविड के बाद टेक्नोलॉजी की जरूरतें कितनी बढ़ गई हैं। आज अमेरिका इज अ सुपर पावर फॉर वेरियस रीजंस, बट टेक्नोलॉजी इज ऑल्सो बिग रीजन वाई इट्स अ सुपर पावर। आज नैस्डैक की आप कंपनीज देखिए, दे आर डूइंग एक्सीडिंगली वेल बिकॉज टेक में हमेशा अमेरिका आगे निकल चुका है। ये टेक में सपोर्ट कौन दे रहा है? इंडियन कंपनीज आर गिविंग द सपोर्ट, बैक एंड हम दे रहे हैं। सो टेक सेक्टर इज अनदर वन विच आई एम वेरी वेरी बुलिश अपॉन। थर्ड, माय फेवरेट सेक्टर राइट नाउ, जो भी एक वैल्यू स्टॉक्स हमको उसमें मिल रहे हैं, वो है फाइनेंशियल्स। आई वुड डिवाइड फाइनेंशियल्स इनटू 3 पार्ट्स। बैंक्स, अगेन अ डिस्क्लेमर, मैं पब्लिक सेक्टर कंपनीज में बहुत कम इन्वेस्ट करता हूँ, शायद ही मेरा एक आध दो एक्सपोजर है पब्लिक सेक्टर कंपनीज में। बट आई बिलीव प्राइवेट सेक्टर में ही मेरा कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, बिकॉज पब्लिक सेक्टर कंपनीज का मकसद शेयर होल्डर के प्रॉफिट नहीं बनाना है उनका। दूसरे, देर आर अदर रीजंस व्हाई दे आर इन द मार्केट, टू जनरेट एम्प्लॉयमेंट एंड टू सर्विस द कम्युनिटी। तो बैंक्स, एनबीएफसी और हाउसिंग फाइनेंस, में 3 अलग तरह से देखता हूँ इसको। बैंक्स में 4, 5 दिग्गज बैंक्स हमारे, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, कोटक, एक्सिस, सबको पता ही है नाम। एनबीएफसीज में द बजाज फाइनेंस स्टोरी, वन ऑफ द बिगेस्ट मल्टी बैगर इन द लास्ट 20 years। अनप्रेसिडेंटेड रन अप देखा था बजाज फाइनेंस ने, बिकॉज it's a fintech company. It's not an NBFC. It's a technology company. Similarly, in NBFC, IL&FL Finance, recent results भी अच्छे आए हैं and very very strong management commentary. Housing finance, low ticket housing finance is one area which I'm concentrating on. Small ticket जो होता है 12 से 20 लाख के लोन, उस वाले सेक्टर में, और उसमें 3 नाम उभर के आते हैं: आवास फाइनेंशियर्स, हाउसिंग, सॉरी, होम फर्स्ट फाइनेंस एंड एक्टर्स। ये तीनों नेम मुझे बहुत पसंद है। डिस्क्लेमर, आई माइट हैव एक्सपोजर टू देम, आई डू हैव एक्सपोजर टू होम फर्स्ट फाइनेंस, तो एंड बैंक्स में भी है मेरा एक्सपोजर। तो ये एक तीसरा सेक्टर है जो उभर के आएगा अगले कुछ सालों में, एज इंडियाज हाउसिंग मार्केट पिक्स अप एंड गवर्नमेंट पॉलिसीज और गवर्नमेंट की काफी सारे इंसेंटिव्स भी है लो कॉस्ट हाउसिंग के लिए। तो दैट इज अनदर एरिया। एंड विश यू, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कोविड ने एक बहुत जबरदस्त इंडिया को अपॉर्चुनिटी दी है टू, वी कॉल इट द चाइना प्लस वन स्ट्रेटेजी। बट उसके पीछे द वर्क द इंडियन गवर्नमेंट, मोदी सरकार ने किया है लास्ट 5, 7 सालों में, जीएसटी आने के बाद जो मेक इन इंडिया कैंपेन किया, और उसके बाद ये कोविड में जो पीएलआई आया है, पीएलआई हैज बीन अंडर एस्टिमेटेड।
पीपल डोंट अंडरस्टैंड कि पीएलआई से क्या क्या होने वाला है। प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव जो हमने दे रहे हैं, इससे इसी टाइप के इंसेंटिव से चाइना आज चाइना बना है। लास्ट 40 साल 35 साल पहले उन्होंने शुरू किया था ये काम। आज पीएलआई आया है इंडिया में, एंड पीएलआई की वजह से ग्रोथ की एक अलग ट्रेजेक्टरी मिलेगी, बिकॉज इंडिया हैज लॉट ऑफ प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज जिसकी जबरदस्त डिमांड है वर्ल्ड में, एंड वी हैव लॉट ऑफ competitive strength to be the leader in that. If not be the leader, at least be the top 2 और top 3. इसमें आपको पता ही है सेक्टर्स क्या हैं। आईटी सर्विसेज थी पहले से, टेक्सटाइल्स का सबको पता था। अब पिकअप हो रहा है फार्मा की थीम, केमिकल्स स्लैश एग्रोकेमिकल्स ये पिकअप कर रहे हैं, फर्टिलाइजर्स भी कुछ हद तक, and auto ancillaries, that is another area, क्योंकि as world changes from ICE in combustion engines, internal combustion engines, to electric, a lot of opportunities will come up, and India is completely geared up to take advantage of this. ऐसी ऐसी companies इंडिया में रेडी पड़ी हैं पूरे वर्ल्ड को सप्लाई करने के लिए। तो वी आर लुकिंग एट द वर्ल्ड एज अ मार्केट फॉर इट, and you can see it in the way Tesla is interested in getting some lot of tie-ups and supplies from India. तो ये 4 एरियाज हैं जो मुझे ज्यादा पसंद आते हैं। कंज्यूमर स्टॉक्स, फॉलोड बाय आईटी, फाइनेंशियल्स एंड मैन्युफैक्चरिंग, मतलब चाइना प्लस वन वाली स्ट्रेटेजी से, एंड आई बिलीव दे वुड grow faster than the rest of the market in coming few years. Yes. Brilliant, sir. Thank you so much for sharing your gems with us. सर मैंने एक ट्वीट पिन किया था, और ट्विटर के इस पॉडकास्ट के में भी कुछ कमेंट्स का सेक्शन होता है, सो देयर आर अ लॉट ऑफ पीपल आस्किंग क्वेश्चंस टू अस। कैन वी टेक अप अ फ्यू क्वेश्चंस मे बी, जितना टाइम अलाउ करे? Yes, Vishnu. Sure, Vishnu. All right. So, sir, हम लोग के पास दो questions. I'll start with. Both of them are around SIP. One is Dinesh sir wanted to ask if they should go for SIP in mutual funds or purchase shares monthly. And similarly, Swaroop sir also wanted to know how can he start SIP. So, can I have your view on SIPs, and if you prefer direct exposure to stock markets or through mutual funds, and what should a common man do? See, SIP is an excellent thing to do. आप SIP में क्या कर रहे हैं? आप मार्केट को टाइम नहीं कर रहे हैं। अब SIP म्यूचुअल फंड्स में करना है कि स्टॉक्स में करना है, वो आपकी कैपेबिलिटीज के ऊपर है। क्योंकि अगर आपके पास अगर टाइम एफर्ट नहीं है, टाइम एनर्जी नहीं डाल सकते आप टू एज आई सेड स्टॉक सिलेक्शन के लिए, तो म्यूचुअल फंड इज अ वेरी गुड वे। आई थिंक 1.5 या 2% जो भी वो मैनेजमेंट चार्ज लेते हैं फंड्स आपके मैनेज करने के, दैट्स वर्थ इट। SIP का मैंने एक ट्वीट डाला था कि कि आप अगर सिंपल एक 100 रुपए की SIP भी करते हैं पर मंथ, आज से 20 साल पहले किसी ने 100 रुपीज की SIP शुरू करी होती पर मंथ निफ्टी 50 में, ETF टाइप की, you will be sitting more than 5 lakh rupees today. So that is the power of compounding. That is the power of how SIPs keep on generating wealth over a period of time. But coming back to the other question of SIP in stocks, SIP in stocks भी कर सकते हैं, provided you have selected the right stocks. Irrespective of market कहाँ जा रहा है, आप डिसाइड कर लीजिए कि भाई मैंने 5 स्टॉक चूज करे हैं, एशियन पेंट्स, HUL, TCS, HDFC और Pidilite फॉर एग्जांपल, और मैंने 5 स्टॉक को डिसाइड किया कि भाई मार्केट में कुछ भी हो रहा हो, मैं हर हफ्ते एक एक स्टॉक के सारे ले लूंगा, या अगर मॉनिटरी वाइज सोचना है तो मैं हर हफ्ते 5,000 रुपए डालने वाला हूँ। ये 5 स्टॉक अगर आ जाते होते मैं 10,000 रुपए डालने वाला हूँ, मतलब वंस इन अ वीक या वंस इन अ फोर्टनाइट आप लेने वाले हो, वो भी आप कर सकते हो। इररिस्पेक्टिव ऑफ द मार्केट कंडीशन होना चाहिए। ये हमारा एक बायस क्रिएट हो जाता है कि अरे यार मैंने HDFC बैंक लेना था, अभी HDFC बैंक 1700 का हो गया है, थोड़ा नीचे आएगा तो लूंगा। क्योंकि म्यूचुअल फंड SIP में आपके पास ये चॉइस नहीं होता, आपने वहां पे डेबिट दे दिया उसको और वो ऑटोमेटिकली डेबिट हो जाएगा आपके अकाउंट से। इसलिए SIP इन स्टॉक्स, क्योंकि वो खुद कर रहे होते हैं हम, इट इज मोर डिफिकल्ट बिकॉज हमारा खुद का बायस आ जाता है उसमें, मार्केट के ऊपर उथल पुथल होने में। जब मार्केट चढ़ रहा होता है तो हम सोचते हैं नहीं यार अभी नहीं लेता मैं, लेट मी बाय इट इन अ कपल ऑफ वीक्स, थोड़ा नीचे आ जाए। और जब नीचे आ रहा होता है तो एक और दुविधा होती है, जब नीचे आ रहा होता है आदमी बोलता है अब शायद और नीचे आएगा, तो आई विल वेट फॉर दैट। So if you can manage your bias, if you can manage your sentiments in these type of situations, SIP in stocks also is a great idea.
परफेक्ट सर, थैंक यू सो मच फॉर आंसरिंग दैट। इसका इनफैक्ट एक और वेलकम। हम लोगों के अभी प्लेटफॉर्म पे एक पोर्टफोलियो दैट वी हैव, सो दिस इज अ क्वेश्चन आई थिंक वी कॉमनली गेट, एंड वी हैव अ पोर्टफोलियो कॉल्ड बैलेंस ग्रो, जिसमें वी हैव बेसिकली पुट ETFs ऑफ गोल्ड एंड निफ्टी. So I think that is also a very good instrument to start SIPs with. Can I have your thoughts on that maybe, sir? या दैट्स अ गुड आइडिया विशु, क्योंकि आप अपने सी बेसिकली आपका काम क्या है, आपकी रिस्क को मैनेज करना है आपको. यू आर फुल्ली इन्वेस्टेड इन द इक्विटी मार्केट्स इन योर अर्ली इयर्स ऑफ इन्वेस्टिंग, दैट्स गुड. बट व्हेन यू आर नियरिंग योर 50s, ग्रेजुअली आप सोचते हो कि थोड़ा सा मुझे बैलेंस लाना है, ताकि माइट एज वेल हैव 60-70% इन इक्विटी, 10-15% इन डेट, 5-7-10% in ETFs, and maybe 5-7-10% in gold. So people sort of diversify in that way, ताकि हम मार्केट को हम एक बैलेंस अप्रोच से मार्केट में एक्सपोजर ले सकें. तो आई थिंक इट्स अ वेरी गुड वे ऑफ बैलेंसिंग योर थिंग. एंड गोल्ड समहाउ, जिस तरह से मार्केट में हुआ है उथल पुथल, आई मीन जियोपॉलिटिकली, gold has not run away. So maybe it's time for it to run. I don't know, but yes, gold also is a decent sort of hedge system. But somehow it is defying that hedging ideas for now. Yeah. Great, great. Thank you so much for that, sir. Okay, so next question is also a pretty interesting one. Ram Teerth sir ka hai, and he wants to ask that how many bad quarters one should tolerate before deciding to do away with the stock. Good one. तो लार्ज कैप कंपनीज के लिए बेनिफिट ऑफ डाउट ज्यादा देना चाहिए. बैड क्वार्टर का भी बैड होने का रीजन समझना पड़ेगा हमको, किस लिए बैड हुआ है. अगर सेक्टर सेक्टर में हेडविंड्स आई हुई है टेम्पररी, तो शायद 2 या 3 या 4 क्वार्टर सडन बैड हो सकते हैं. बट अगर मैनेजमेंट ने अपने तौर तरीके चेंज कर लिए हैं, या प्रोएक्टिवनेस नहीं आ रही है, या सॉर्ट ऑफ एक लेगार्ड अप्रोच हो चुकी है, तो वो आपको एक जजमेंटल इश्यू है, वो आपको समझना पड़ेगा कि व्हाट इज द बेस रीजन बिहाइंड इट. अब आप एग्जांपल लीजिए टाटा मोटर्स का. आई एम माय डिस्क्लोजर, आई एम इन्वेस्टेड इन टाटा मोटर्स. बट टाटा मोटर्स ने कुछ किया ही नहीं था लास्ट कितने सालों से. बट दे वर बिल्डिंग अ बेस फॉर इट. उनकी डेट इतनी ज्यादा थी दैट इट वाज एन ऑटोमेटिक सेल फॉर एनीबडी. यू नो तो ऑब्वियसली आई ऑल्सो सोल्ड टाटा मोटर्स इन दैट टाइम. बहुत ही स्लो चला वो. लेकिन फिर आपको ये भी ध्यान रखना है कि वो कंपनी में दम है, दमदार कंपनी है. ट्रैकिंग जरूर रखनी की उसकी. और जब भी वो एक बैड फेज से बाहर निकले, यू शुड ग्रैब इट एएसएपी. सो आपने देखा होगा कोविड के टाइम पे 80 रुपए का टाटा मोटर्स हो गया था, वॉट एवर. बट इन when COVID was getting better, things were getting normalized. Tata Motors started showing its true color. It has taken away market share in the last 24 months. आप चेक करिए, टाटा मोटर्स ने Hyundai और मारुति का मार्केट शेयर खाया है. द एस्टेब्लिश्ड प्लेयर्स का मार्केट शेयर खाया है. तो यस, बैड क्वार्टर्स, बट उसके बाद कैसे मैनेजमेंट अपने आप को, हाउ दे पुल देमसेल्व्स बैक, दैट इज आल्सो समथिंग पीपल विल हैव टू कीप अ नोटिस ऑन. या. Right, right, perfect, sir. Okay, एक और क्वेश्चन है सर प्रसाद सर का, एंड ही वांट्स योर व्यू ऑन डिविडेंड्स एज पैसिव इनकम फॉर रिटायर्ड पर्सन्स इन ब्लू चिप स्टॉक्स. Excellent. Dividend as passive income is a beautiful choice. Obviously, जैसा प्रसाद जी ने बोला कि टुवर्ड्स रिटायरमेंट आपको एक कंसिस्टेंट इनकम फ्लो चाहिए होता है. तो अगर आपके पास एक 4-5% डिविडेंड यील्ड की कंपनी मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है. लेकिन इसमें एक बहुत बड़ा मगर है. दैट मगर इज कि द डिविडेंड पेइंग कंपनी शुड बी ग्रोइंग ऑल्सो. सो आई विल गिव यू एन एग्जांपल. आप अगर आज एक कंपनी लेते हैं जिसका डिविडेंड यील्ड है 8%, 7%, 100%, 99% वो कंपनी पीएसयू कंपनी होगी जो 8-10% डिविडेंड दे रही है. अब वो एक शेयर, मैं शेयर्स के नाम नहीं लेना चाहूंगा, बट आपको बहुत सारे एग्जांपल्स दिख जाएंगे पीएसयू में. अगर ये शेयर 100 रुपए का है और आपको हर साल 8% डिविडेंड देता है, वो अच्छी बात है. आपके पास 8% डिविडेंड आ रहा है, यूर हैप्पी, मेरे को रिकरिंग आ रहा है, ठीक है. और 5 साल के बाद आपने 8 करके 40% डिविडेंड खींच लिया है, वेरी हैप्पी. आई एम कटिंग रिकरिंग दिस थिंग. बट वो शेयर प्राइस अभी 80 रुपीज का हो गया है 100 से. सो द शेयर प्राइस इज डिप्रिशिएटेड 20% एंड द डिविडेंड यू गॉट इज 40%. तो आपका इफेक्टिव तो आपके पास 20% ही आया है. यू नो व्हाट आई मीन. ये चीज जज करना जरूरी है. एंड ग्रेट एग्जांपल ऑफ दिस हैज बीन कोल इंडिया. जिस हाइप से कोल इंडिया आया था, और आज कोल इंडिया ने
पोटेंशियल होते हुए डिलीवर नहीं कर पाया है, अगेन वेराइटी ऑफ रीजन, इट्स अ ग्रेट कंपनी बट इट हैज बीन अ वेल्थ डिस्ट्रक्टर। ओएनजीसी इज अ वेल्थ डिस्ट्रक्टर, लेकिन डिविडेंड देते हैं ये लोग अच्छे 6, 7, 8% के। So you'll have to choose the stock which is also doing reasonably well apart from giving dividends. Otherwise आपका जो इफेक्टिव रिटर्न आएगा वो पुअर हो जाएगा। 5 साल में आपने 40% यील्ड ले लिया, लेकिन 20% स्टॉक की वैल्यूएशन में भी गवा दिया आपने। और इसके आपको करते करते मैं आपको 25 एग्जांपल आप खुद ही डिग करोगे, आपको मिल जाएंगे। सो प्लीज बी केयरफुल ऑन द स्टॉक सिलेक्शन अगेन व्हेन यू आर बाइंग फॉर डिविडेंड यील्ड। या विशु। Great, sir. Okay, next question, sir, Utpal sir का है, and he wants to know कि as Indian economy is, may rural economy especially is about to perform or is expected to perform in the coming years. Do you have any observations around that, and how can we utilize that in our investing? Can you come again? Rural economy में what So kind of how can we maybe utilize the growth story of Indian rural economy in investing? Like maybe some sectors that we can Okay. watch out for because of that, or companies that are doing well there. Yes. So see again consumption पे वापस आएंगे हम। जब जब अच्छा मानसून होता है and there's a pickup in the earnings for farmers, एक consistent 2-3 साल अच्छे मानसून हो जाते हैं, तो what do farmers spend in? What do rural India spend in? ये क्वेश्चन आप अपने आप से पूछिए, वो क्या खरीदने वाले हैं? So they are not going to buy exotic holidays to overseas, or take plane tickets, or go for cruise. What they're gonna do? They're gonna do consumption. What they're gonna consume? They're gonna consume consumer staples. जो हमने भी डिस्कस किया, वही आईटीसी, वही मैरिको, वही डाबर, वो चलना शुरू हो जाएंगे. What else would they do? They'll buy tractors. They'll build, a warehouse, or they'll make a house. They'll make, put some, fencing around there. So सीमेंट, स्टील, छोटा मोटा जो काम होते हैं ये शुरू हो जाएंगे उनकी एक्टिविटीज में. दे बाई बेटर टू व्हीलर्स, सो द लाइक्स ऑफ हीरो होंडास एंड बजाज एंड द एनफील्ड से कुछ हद तक चलना शुरू हो जाएंगे. ट्रैक्टर हो गया, टाइलर्स की कंपनी हो गई, सोप्स, जैसे मैंने बोला सोप्स, या स्टेपल्स, या शैम्पू, या सो ये सारा जो एफएमसीजी बास्केट है ये हल्की पे चलना शुरू होता है, एंड देन इट फिल्टर्स डाउन फर्दर टू टू ग्रेजुअली बाइंग ऑफ इलेक्ट्रॉनिक गुड्स एंड ऑल. तो आप खुद एक जजमेंट करके देखिए कि क्या स्पेंडिंग करता है एक गांव का किसान, एंड दैट विल गिव यू एन आइडिया कि रूरल इकोनॉमी में कहाँ पे किस स्टॉक्स पे बूम आएगा. सो या दैट वुड बी माय आंसर फॉर दैट. Great, sir. Thank you so much for sharing that, sir. Sir, next question Pranay sir का है. If you have a view on real estate and metal sector. विशु, आई डोंट इन्वेस्ट इन मेटल स्टॉक्स मच. मैं सिक्लिकल स्टॉक्स में मेरी पकड़ बहुत वीक है. मैंने जब भी मेटल, शुगर, सीमेंट तो नहीं बोलूंगा, मेटल, शुगर और पेपर स्टॉक्स पे इन्वेस्ट किया है, मैंने कभी पैसा नहीं बनाया है. बिकॉज वो एक साइकिल है, वो मुझे साइकिल की एंट्री सही टाइम पे लेनी होती है, वो मैं ले नहीं पाता हूँ. आई एम नॉट इंटेलिजेंट इनफ टू टाइम दैट साइकिल. तो मैं इसलिए मेटल्स में और सिक्लिकल स्टॉक्स से थोड़ा दूर रहता हूँ. The other one is real estate. Real estate cycle is picking up. Only thing to really check in real estate is there are a lot of dodgy companies listed in the Indian stock markets which have in the past destructed wealth like anything. So stick to the top 3, 4, 5 companies. आपको पता ही है top 5 कौन सी हैं. The Godrej Industries हो गई आपकी, और ये है DLFL अभी ठीक कर रही है. तो top Mahindra Life Spaces and all that, top 5-6 companies में से ही यू शुड चेक आउट, एंड प्लीज मेक श्योर दैट कोई ज्यादा डेट नहीं लिया हुआ है, एंड दोज इश्यूज आर नॉट देयर. बट या रियल एस्टेट एक साइकिल शुरू हो चुका है इंडिया में, एंड आई थिंक इट हैज अ प्रॉमिसिंग फ्यूचर अहेड. राइट, परफेक्ट सर. सर मेरे पास बहुत सारे स्टॉक स्पेसिफिक क्वेश्चंस हैं. इफ यू अलाउ, मे बी व्हाट आई कैन डू इज मैं क्विकली 4-5 नाम जो हैं वो ले लेता हूँ. If you are tracking any of them, so we can discuss them. Otherwise, we can go to the next question. So I've got Trident, I've got EKI Energy, I've got Eicher Motors, Jubilant Ingrevia. Then there is Zensar Technologies. Yeah, I think these many stocks. सारे अच्छे स्टॉक हैं टू अ सर्टेन एक्सटेंट. ट्राइडेंट और EKI एनर्जी में फॉलो नहीं करता हूँ. आई वाज वेरी बुलिश ऑन जुबिलेंट इंग्रेविया.
मुझे वो एक उनका जो स्प्लिट हुई थी कंपनी उसमें मिला था, फार्मोवा में से, जुबिलेंट में से। बट थोड़ा सिक्लिकलिटी का इश्यू है इंग्रेविया में। बट यस, कपल ऑफ क्वार्टर्स चेक करने पड़ेंगे, तो वो थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। ट्राइडेंट, एकीआई, जुबिलेंट, बाकी दो कौन से बोले आपने? सर आइशर मोटर्स और जेंसा टेक्नोलॉजीज। जेंस्टार टेक्नोलॉजी इज अ गुड मिड कैप आईटी कंपनी, अच्छी ग्रोथ है। बहुत पिटा है लास्ट कुछ 6-8 महीने में, तो उसके रीजंस मेरे, आई एम नॉट इन्वेस्टेड तो मैंने चेक नहीं करे, बट ज्यादा कुछ प्रॉब्लम नहीं है, सारे आईटी स्टॉक्स पिटे हैं। एंड कमिंग टू आइशर, आइशर इज अ ग्रेट स्टोरी। आइशर इज वन ऑफ द बिगेस्ट मल्टी बैगर्स ऑफ द लास्ट डेकेड। एक जोक भी आया, जो जोक आया करता था व्हाट्सएप पे कि अगर 2005 में आपने आइशर की बुलेट नहीं खरीदी होती और आइशर का स्टॉक खरीदा होता, तो आज आप एक मर्सिडीज बेंज खरीद सकते थे, विच इज एक्चुअली ट्रू। तो आइशर हैज बीन अ ग्रेट वेल्थ क्रिएटर। ये ऑब्वियस चीज है कि इन कमिंग फ्यूचर आइशर विल नॉट बी एबल टू ग्रो एट 30-35% व्हाट इट वाज ग्रोइंग इन 2008, 9, 10, 11, 12। आइशर की ग्रोथ अभी स्लो हो चुकी है, इंडस्ट्री से फिर भी अच्छी है। इंडस्ट्री से वो शायद 4-5% एक्स्ट्रा ग्रो कर रहा है। बट आइशर इज अ गुड कंपाउंडिंग स्टोरी एंड देयर इज वेरी एग्रेसिव मैनेजमेंट, यू नो। आई लव, आई थिंक मिस्टर सिद्धार्थ लाल उनके एमडी हैं, एंड he has been pretty vocal about his aggressive stance in going future. Yeah. राइट, परफेक्ट। फॉर ऑडियंस काफी सारे क्वेश्चंस हमारे पास आ रहे हैं जो हम लोगों ने ऑलरेडी पॉडकास्ट में डिस्कस किए हैं। फॉर इंस्टेंस नीरज सर ने पूछा है कि सम सेक्टर्स इन विच एसआईपी कैन बी डन। सो सर वो हम लोगों ने काफी कुछ डिस्कस किया था। वील रिलीज अ रिकॉर्डिंग ऑफ दिस पॉडकास्ट एज सून एज दिस ओवर, यू कैन मे बी गो थ्रू द पॉडकास्ट, एंटायर पॉडकास्ट। देन पंकज सर का भी 15-20 years में इकोनॉमी का क्या देखना है, वी हैव काइंड ऑफ डिस्कस दैट। Okay, so this is a good question. I think Ajit sir ने पूछा है, is there an ideal mix that you can maybe suggest of small cap, mid cap, and large cap in our portfolio for a long term investment perspective? Good question. In fact, again, it depends on your risk appetite. मगर मैं जिस तरह से कंस्ट्रक्ट करता हूँ, तो आई एम इन माय 40s, तो माय रिस्क एपेटाइट माइट बी डिफरेंट टू somebody in their 20s. But 50% of my stocks in my portfolio are large cap stocks. Large cap Nifty नहीं, but Nifty plus Nifty next 50 गिन के। तो BSE के टॉप 100 स्टॉक्स में से मेरा 50% पोर्टफोलियो फॉर्म होता है, and the rest 50% is a mix of I'm talking about my Indian exposure in stock markets. I do have exposure to other ETFs across the world, but मेरा इंडिया एक्सपोजर जिस तरह का पोर्टफोलियो है उसमें 50% इज लार्ज कैप्स, मतलब 20,000 करोड़ मार्केट कैप की ऊपर की कंपनी, एंड रेस्ट 50% इज अ मिक्स ऑफ मिड एंड स्मॉल। मिड थोड़े ज्यादा हैं तो शायद 30% होंगे, और स्मॉल कैप करीब 20% होंगे। मगर इट इज अगेन, ये मेरा पर्सनल वे ऑफ पोर्टफोलियो करने का है। पीपल कैन कैन डू दे डिसाइड ऑन देयर ओन रिस्क रिवॉर्ड। इस तरह का पोर्टफोलियो करने से मुझे एक एक सॉर्ट ऑफ एक बैलेंस क्रिएट हो जाता है कि मैं बहुत डिफेंसिव भी नहीं होता हूँ, और मेरा थोड़ा सा आई कैन जनरेट सम अल्फा। सो आई हैव अ नैक ऑफ हैंडलिंग हाई बीटा। मैं हाई बीटा को एब्जॉर्ब कर सकता हूँ, वोलेटिलिटी को एब्जॉर्ब कर सकता हूँ। इसलिए मेरे पास वो जो स्मॉल कैप्स हैं वो हाई बीटा वाले स्टॉक्स हैं, और वो मुझे फाइनली अल्फा जनरेट करके देते हैं। सो माय एम इज टू क्रिएट एज मच अल्फा एज आई कैन फॉर माय फ्रॉम माय investments, and that is why I made this sort of a setup. Right. Great, sir. Thank you so much for sharing that. So sir, questions तो हमारे पास बहुत बहुत सारे आ रहे हैं, but of course we have a time limitation as well. So, but before we part, I would love to ask you to please give us some final parting advice, or maybe a concluding remark, or something that kind of sums up this amazing session that we have had with you and learned so much with you. Yeah. See, my learnings in the stock market for last 2003 से 19 साल हो गया, तो in last 19 years has been कि when constructing your portfolio, go with market leaders, because market leaders will make it large. अच्छी शानदार कंपनीज आगे जाके और बड़ी दिग्गज कंपनीज बनेंगी, यू नो। तो एंड हैव अ लॉन्ग टर्म होराइजन। शॉर्ट टर्म में आप 10 या 20% गेन के लिए खेल रहे होते हो। In the long term, you're looking at 2 to 5 times of your invested capital. So, short term और long term में difference समझिए।
टू मच ऑफ चर्निंग ऑफ पोर्टफोलियो सिर्फ आपके ब्रोकर को और वो सारे एसटीटी और वो सारे चार्जेस में जाएंगे, आप नहीं कर पाओगे टाइम. सो टाइमिंग द मार्केट इज अ फ्यूटाइल एक्सरसाइज. डू नॉट इवन think of doing it. Nobody has done it in the past, and it's almost next to impossible. Um, Stock selection is definitely the key while investing. But apart from that, it doesn't matter आप top down approach लेते हो या bottom up लेते हो. I prefer a bottom up approach, but stock selection is definitely the key. Um, Companies which are growing faster than the industry average is the way I look at when I'm selecting stock. मैं किसी भी पैरामीटर पे स्टॉक चेक कर रहा हूँ किसी भी डोमेन में, इंडस्ट्री से फास्ट ग्रोथ दे रहा है कि नहीं दे रहा है, वो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है. तो ये सारे क्राइटेरिया देख के अगर आप और उसको आपके स्टॉक सिलेक्शन अच्छे से करके, इफ यू कैन गिव इट टाइम टू कंपाउंड, you are definitely going to create tremendous wealth. uh, Compounding needs energy, sorry, needs patience and time. So yes, that is your biggest friend. That would be my parting words, Vishu. Right. Thank you so much for that, sir. And one more thing before we part, please, please, please do allow us to host you again so that we can learn more from you. This 1 hour is just not enough to absorb all of that information. Thanks, Vishu. And again, the disclaimer: all the stocks discussed here are for educational purpose, and I might have my vested interest in them, and I could be invested. So thanks again, Vishu. It was a very nice interactive session. No hiccups, and इतनी smooth spaces. कई बार spaces में थोड़े issues आते हैं, but this has been really, really very smooth. Excellent. Yeah, thanks again. Thank you so much, sir. Thank you so much. And thank you, our audience, beautiful audience, for staying with us for the entire hour. We still have over 300 people listening to us, all thanks to your wisdom, sir. I really can't thank you enough. And with that, it's a wrap. Thank you so much, audience. Have a profitable day tomorrow and a very good night. See you next time. Bye bye.